अनकॉमन वर्ड बोलेंगे तो समझना बहुत मुश्किल है। चाहे पंजाबी टाइम को टैम बोले, सारी दुनिया समझ आती है कि टाइम की बात कर रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर आप कोई अनकॉमन वर्ड बोलेंगे, केओस है, और आप चाउस बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं। ईडियम्स, इडियोमेटिक फ्रेजेस, इडियोमेटिक लैंग्वेज पर फोकस होना चाहिए, ना कि रटे रटाए प्रोवर्ब्स को इंट्रोड्यूस आप करने को ईडियम्स बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपके स्कोर को बल्कि लो कर देती हैं क्योंकि Hi friends, and how are you doing today? Today's video is related to one of the latest cue cards, and you are waiting for the sample answer of this cue card quite eagerly. Without wasting time, let me share the cue card with you, and the cue card is talk about something you cannot live without. And the examiner these days is specifically saying, do not talk about a mobile or a computer. That means this is something that everyone wants to talk about, but the examiner doesn't want that you speak on this topic, and for that reason, you have to come up with something different or a very unique idea. Well, we have to choose something very practical so that we can easily develop a story for 1 to 2 minutes, and this is what I'm going to do with you in this cue card. And what the cues you can expect, the cues can be what it is, when you received or how you got it, for what purpose you use it, and why you think you cannot live without it. So before I move ahead and share the sample answer and the discussion of the idea behind this cue card, I would like to request you to please subscribe my channel, help me to grow more. So what the idea can be, as you know, I discussed the idea behind in the regional language Hindi, and I'm going to choose a watch. घड़ी में बात करने जा रहा हूँ, रिस्ट वॉच जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, एंड दैट रिस्ट वॉच जो मिली आपको आपके ग्रैंडफादर से एज अ बर्थडे गिफ्ट। 8 में थे, 10th में थे, 10+2 में थे, उस टाइम पर आपके ग्रैंडफादर ने आपको ये घड़ी गिफ्ट की, और इसकी आपके लाइफ में एक बहुत ही स्पेशल वैल्यू है। नो डाउट ये आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन उससे ज़्यादा ही इमोशनल वैल्यू अटैच टू इट, क्योंकि आपके ग्रैंडफादर की तरफ से दिया गया आज तक का ये सबसे बढ़िया तोहफा। तो उनके चले जाने के बाद अब यही उनकी एक निशानी है आपके पास, लेकिन इस इमोशनल वैल्यू के साथ साथ हम इससे जस्टिफाई करेंगे कि आपके लिए कितनी प्रैक्टिकल है। आप इससे ऑल द टाइम बात कर रखते हैं, डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कौन से ब्रांड की है, देखने में कैसी है, स्ट्रैप है या चेन है या डायगर, ये डिजिटल है या इसका एनालॉग है जो डायल है, देखने में कलर कैसा है। ये सारी स्पेसिफिकेशंस देने के बाद हम बात कर सकते हैं कि ये अपने टाइम की सबसे बढ़िया वॉच थी, क्योंकि इसमें एक यूनिक फीचर था अलार्म का जो उस टाइम पर इजीली अवेलेबल नहीं था। एंड यू कैन से दैट आप अर्ली मॉर्निंग इस पर अलार्म सेट करते हो, यही वॉच जो है आपको टाइमली इन द मॉर्निंग उठाती है। आप बहुत ही पंक्चुअल पर्सन है, हर काम आप टाइमली करते हैं, एंड दिस वॉच रियली हेल्प्स यू कि आप हर एक चीज़ एज़ पर द स्केड्यूल करते रहें। यू कैन से दैट आई एम अ स्टूडेंट, मुझे स्कूल के बाद काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने रहते हैं, और अगर ये घड़ी नहीं है तो आप हमेशा टाइम पर वो काम नहीं कर पाते हैं। तो इस घड़ी की वजह से आप हर जगह पर टाइमली पहुंच जाते हैं। इनफैक्ट एज आई ऑलवेज रिकमेंड कि एक आध एग्जाम्पल ऐड कीजिए, तो एक एग्जाम्पल ऐड कर दीजिए कि आई स्टिल रिमेंबर द टाइम इसने काम करना बंद कर दिया था, और इसे रिपेयर के लिए मैंने रिपेयर सेंटर भेजा, तो वहाँ पर 1-2 दिन जब इसे लगे वापस आने में, तो ड्यूरिंग दिस टाइम इट वाज रियली डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मैनेज विदाउट दिस वॉच। तो इन सारी बातों से बड़े आराम से आप 1-2 मिनट की स्पीच डेवलप कर सकते हैं। आपका फ्लुएंटली बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, आपका ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू दोज थिंग जिन पर बच्चे फोकस करना चाहते हैं। ज़्यादातर टीचर्स करवाते हैं और स्टूडेंट्स करते हैं बहुत मुश्किल इंग्लिश वर्ड्स। पहली बात तो राइटिंग में तो फिर भी याद आ जाए, रियल टाइम में कहाँ पर याद आते हैं। दूसरी चीज़, इनकी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, वर्ड भी नहीं सही याद रहता, उनकी यूजेज भी नहीं सही याद रहती, और सबसे बड़ी बात प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक करते हैं। अनकॉमन वर्ड बोलेंगे तो समझना बहुत मुश्किल है। चाहे पंजाबी टाइम को टैम बोले, सारी दुनिया समझ आती है कि टाइम की बात कर रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर आप कोई अनकॉमन वर्ड बोलेंगे, केओस है, और आप चाउस बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं।
सिमिलरली मैं बात करूँगा ईडियम्स, इडियोमेटिक फ्रेजेस, इडियोमेटिक लैंग्वेज पर फोकस होना चाहिए, ना कि रटे रटाए प्रोवर्ब्स को इंट्रोड्यूस आप करने को ईडियम्स बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपके स्कोर को बल्कि लो कर देती हैं, क्योंकि ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस वैसी होती नहीं है जैसी अनकॉमन इंग्लिश या अनकॉमन फ्रेजेस डालकर आप उसे थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं। सो जनरल टॉक अपनी इम्प्रूव कीजिए, बट ऑल आई वुड से वर्क ऑन द फ्लुएंसी। रिदम में बोलिए, चाहे स्लो बोलिए, लेकिन स्वीटली बोलिए। तो आइए देखते हैं कि एक स्टूडेंट को रिदम में इसका सैम्पल आंसर कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। और ये सैम्पल आंसर है मेरी बुक से, आइल्स स्पीकिंग बूस्टर ई बुक, जो कोई भी स्टूडेंट अपने घर पे बैठे 30 सेकेंड से लेस देन एक्सेस कर सकता है। और कैसे कर सकते हैं आप इसे एक्सेस ऑन माई आइल्स कोचिंग एप्लीकेशन, दिस इज व्हाट आई विल गाइड यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम चेक आउट दिस सैम्पल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड. Well, different people are obsessed by different things, and often they cannot live without those. And one such thing which is very important for me is my wristwatch. I received this watch from my grandfather when I was in grade 10. I still remember it was my birthday, and my grandpa took me to a shop from where he got me a very expensive branded wristwatch with a beautiful dial and a leather band. From that day, it became a part and parcel of my life. Unfortunately, he is no more, so this watch is the only souvenir of my grandpa that I have. I wear it all the time as I am a very punctual person, and I make sure that I do everything on time. And this wristwatch helps me to be on time. This watch is pretty old but has basic features like I can set alarm on it, which was quite unique in those days. So this watch helps me to get up in time to get ready for school. Everything I make a schedule of things to do so that I do not miss anything important, and I regularly check time on my watch to do things promptly. In fact, after school I have to attend a couple of extra classes, and because of this watch I never get late. Unfortunately, once it stopped working and I had to get it fixed, which took a couple of days, and at that time I realized how dependent I am on this watch. Overall, it is one thing that I possess and I really cannot live without. And that's it. That's easy. A sample answer of this cue card is, which can easily help you to score 8 or beyond band 8, but it would all depend how you present in front of the examiner. So let's check out how you can purchase Speaking Booster to get access to all the latest speaking content in written format. First of all, download IELTS coaching application from Google Play Store. If you are an Apple user, then download My Institute app and enter code IELTS IELTS. On home page, click on Store and choose Speaking Booster. Click in Buy Now and pay online to unlock the book for next 6 months. And that's it. You're done. Happy buying!